Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss today the color of the complexes. Color of complexes. Usually the complex compounds or the coordination compound or the complexes, they are colored. यहाँ हम बुनियादी तौर पर डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस का, कि यूजुअली ये जो कलर शो करते हैं तो ये किस तरह बुनियादी तौर पे शो करते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस. व्हेन वाइट लाइट इज़ अलाउड टू फॉल ऑन ए कम्प्लेक्स, कि जब हम किसी कम्प्लेक्स के ऊपर वाइट लाइट फेंकते हैं, कि अगर आपका कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके ऊपर हम वाइट लाइट जब फॉल करते हैं तो इसमें बेसिकली तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहली तो पॉसिबिलिटी ये है द कम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स द लाइट कंप्लीटली, कि अगर हम एक कम्प्लेक्स है उसके ऊपर हम वाइट लाइट जब डालते हैं तो उसमें पहला तो ये हो सकता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. द कम्प्लेक्स इज़ ब्लैक. नंबर टू, इफ़ द कम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट or transmit the whole white light, it will show white color. Now in this case black, and in this case it is white. The third possibility is the complex may absorb some light and reflect or transmit the remaining light. The complex will appear as colored. तो फिर ये एज ए कलर्ड शो करेगा. इससे मुराद ये है बेसिकली कि जब हम किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर, कोई आपके पास कम्प्लेक्स कंपाउंड है, आप उसके ऊपर उसको वाइट लाइट उसके ऊपर फेंकते हैं, तो उसमें फिर ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो कम्प्लेक्स जो लाइट हमने उस पर फेंकी है वो कम्प्लीटली उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो उसका कलर जो है हमें ब्लैक नज़र आएगा. दूसरी ये है कि कम्प्लेक्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, द होल जो लाइट है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है या ट्रांसमिट कर देता है, तो फिर वो हमें वाइट नज़र आएगा, यानी कोई कलर वो शो नहीं करेगा. दूसरा ये है कि सम टाइम इट एब्जॉर्ब सम लाइट एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग लाइट. तो ज़ाहिर है जो वो ट्रांसमिट कर रहा है या जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कलर हमें नज़र आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये बुनियादी तौर पे एक कलर्ड कम्प्लेक्स है. इसका मतलब ये हुआ कि कलर ऑफ द कम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द विजिबल लाइट व्हेन फॉल्स ऑन इट, या फोटोन जो वो एब्जॉर्ब करता है या वो जो रिफ्लेक्ट करता है, तो फिर हमें ये कंपाउंड जो है हमें वो कलर्ड नज़र आएगा. अब बेसिकली ऐसा क्यों है? चूँकि जो ट्रांजिशन मेटल होती है, ट्रांजिशन मेटल्स possess partially filled d orbital. You can say that there are some electrons in the d orbital. On complex formation, the d orbitals split into two sets of orbitals. Number one, low energy d orbitals, and number two, high energy d orbitals. यानी इससे मुराद ये है कि चूँकि ट्रांजिशन मेटल्स में डी ऑर्बिटल जो होता है
वो पार्शली फिल्ड होता है, किसी में D2 है, किसी में D3 है, D4 है, इस सेंस में। तो जब ट्रांजिशन मेटल्स को हम कम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, यानी उसका कम्प्लेक्स बनाते हैं, कम्प्लेक्स क्या होता है? यूजली इट इज़ composed ऑफ, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, कि देयर आर सम नंबर ऑफ लिगेंड्स विच donate their electron pairs to form coordinate covalent bonding depending upon the coordination number 2, 3, 4, 5, 6। तो उसमें ये देखा गया है कि जो d ऑर्बिटल्स हैं, बेसिकली जो d ऑर्बिटल है इसकी 5 ओरिएंटेशंस हैं, दैट इज dx y, dx z, dy z, dx square minus y square and dz square. These are the 5 orientations of d orbital. So जब आप किसी ट्रांजिशन मेटल का कम्प्लेक्स बनाते हैं, कम्प्लेक्सेशन करते हैं, तो ये बेसिकली जो d ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन होती हैं ये स्प्लिट कर जाती हैं इनटू 2 set of orbitals, into 2 set of orbitals. That is, if you have 5, these are the 5 orientations, they split into this type of 2 orbitals. Now this is the energy and here this is the energy. So this is low energy and these are high energy orbitals. Now if it has, suppose 1, 2, 3 or 4 electrons, so when visible light, जब हम किसी कम्प्लेक्स पे करते हैं तो ये विजिबल लाइट जो होती है, ये जो बेसिकली आपको डिफरेंस शो हो रहा है, डिफरेंस इन एनर्जी जो बेसिकली शो हो रहा है, ये बेसिकली एक विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से शिफ्ट होता है, यहाँ पे आ जाता है। वन इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू द हाई एनर्जी ऑर्बिटल। So this is dxy, dxz and dyz. This is dx square minus y square and this is dz square. This is called ECAT, doubly degenerate, and these are called triply degenerate. This is doubly degenerate and these are triply degenerate orbitals. Degenerate means that these two have same energy and they are of higher energy, and these are triply degenerate, they have same energy but they have low energy. So here it absorbs some light and the electron they get excited. These are called DD transitions, DD electronic transitions। और ये बेसिकली किसी कुछ कलर्स की लाइट को जो एब्जॉर्ब कर लेता है और वापसी पे बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बुनियादी तौर पे जो लाइट को रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट करेंगे तो वो हमें एक कलर नज़र आ जाता है। तो लिहाजा ये जो कलर का होना है ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक transitions and this the electronic transitions in different complexes are of different nature, and the white light which is absorbed is also of different wavelength, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. This is the basically spectrum of light, जो visible light है जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम इसकी एक रेंज होती है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो कम्प्लेक्सेस हैं, जब कम्प्लेक्सेशन की जाती है तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, लो एनर्जी जिसको यहाँ पे हम T2G सेट का नाम देते हैं और इनको हम EG सेट का नाम देते हैं। और बुनियादी तौर पे ये 5 इसके जो ओरिएंटेशन है डी ऑर्बिटल्स की डिपेंडिंग अपॉन दी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो बेसिकली दे स्प्लिट इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स
that is triply degenerate of low energy, and the doubly degenerate, they are of higher energy. When the visible light is falls on this complex, so it takes the spectrum, it absorbs the wavelength of some light of wavelength of white light, and finally it reflects and transmits. That shows the color of that complex. Now we can represent the spectrum because some color is absorbed, that is high energy, decreasing energy to high energy. So it shows different colors. It shows different colors. That is violet, blue, greenish blue, bluish green, then green, yellowish green, yellowish and red. So this is the visible spectrum. So the range starts from 4,000 angstrom to 7,000 angstrom. These are of varying wavelength. Now when the white light falls on the complex, then if it is completely absorbed, the complex will appear black. If it is reflected or transmitted as a whole, अगर ये सारी लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है या ट्रांसमिट कर देता है, तो फिर तो ये आपको वाइट नज़र आएगा. और अगर ये कुछ लाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है, कुछ वेवलेंथ की लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और कुछ को ये ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमें तो वो कलर नज़र आता है जो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जो कोई चीज़ शो कर रही होती है. अगर एक कपड़ा ग्रीन नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है या ट्रांसमिट हो रही होती है, बेसिकली वो हमें नज़र आती है. तो इस लिहाज से फिर वो किस रेंज में आएगा, दैट विल बी इन बिटवीन दी 4,000 ऑंगस्ट्रॉम टू द 7,000 ऑंगस्ट्रॉम. तो इस लिहाज से हमें वो उसका एक जो कलर है वो बेसिकली हमें नज़र आ जाएगा. इस लिहाज से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा जो कलर है हमें वो इसमें मिलेगा. नाउ वी कैन आल्सो शो द कलर reflected or transmitted. The color reflected or transmitted. This is low, here increasing wavelength, and here it is high. This one, yellow, green, yellow, orange, red, purple, violet, green, bluish green. Now this is the color absorbed and this is the color transmitted. तो अगर कोई एक कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी एक सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, तो नॉर्मली वो किसी और कलर ऑफ लाइट को एमिट कर रहा होता है और वो ट्रांसमिट कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. तो वो बेसिकली हमें कलर जो है उसका वो नज़र आ जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 इज़ पर्पल, द कलर ट्रांसमिटेड एंड एब्जॉर्ब्स, इट एब्जॉर्ब ग्रीन. तो बेसिकली इसमें जो पर्पल कलर आ रहा है ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉरी ट्रांसमिट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये पर्पल नज़र आ रहा है. और जो एब्जॉर्ब है लाइट वो ग्रीन है. सो पर्पल कलर इज़ ट्रांसमिटेड, सो इट विल बी पर्पल. नाउ दिस अगेन बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron as well. The color of the ion, of the complex ion, depends upon the number of unpaired electrons. किसी भी complex के अंदर जो number of unpaired electrons हैं
वो कितने हैं, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो उस लिहाज से जब लाइट इस पे पड़ती है तो फिर वो एक मखसूस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और जिस वेवलेंथ लाइट को ये ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो कलर हमें बेसिकली नज़र आता है, जिससे हम वी कैन ऑब्जर्व द पर्टिकुलर कलर ऑफ दैट complex. Now the number of unpaired electrons, the color of ion, with some examples. Now this may be 0, 1, 2, 3, 4. The number of electron pairs will be, might be 0, there is no unpaired electron, maybe 1, 2, 3 or 4. Zn plus 2, Ti plus 4, they are colorless, and these two possess no unpaired electron, so usually their complexes will be colorless. Titanium plus 3, this is purple, Cu plus 2, green. Sorry. So you can say that if Zn plus 2, it has no unpaired electron, similarly Ti plus 4 has no unpaired electron, then the ion will be colorless. Now here titanium plus 3, it will look purple, titanium complex. Similarly copper plus 2. Now here vanadium plus 2, vanadium plus 3, green, nickel plus 2, this is also green. Now in this case, chromium deep green, cobalt pink, chromium plus 2 blue, iron plus 2 green. There may be 5 electron pairs, Fe plus 3 yellow. So these are some ions, whether they are colored or they are colorless. This also depends upon the number of unpaired electrons. If there is no unpaired electron, means 0, Zn plus 2, titanium plus 4, they will appear colorless. Whereas if there is a 1 electron pair, that is titanium plus 3 purple, copper plus 2 blue. Similarly, if there are 2 unpaired electrons, for example in vanadium plus 3, it will be green, nickel plus 2, that will also look green. Chromium, if there are 3 unpaired electrons, then it will be deep green, and cobalt plus 2 will be pink. If there are 4 unpaired electrons, then chromium plus 2 blue, Fe plus 2 green, and if there are 5 unpaired electron, maximum number, plus Fe plus 3, that will appear as yellow. In general, a complex appears black or appears colorless when it absorbs light in IR and UV region. In general, a complex ion appears as colorless when it absorbs the light in the IR infrared region, or if it absorbs the light in IR infrared and UV ultraviolet region. For example, anhydrous copper sulfate is colorless. It will be colorless. Now, it is clear here that again when white light falls on a certain complex compound, मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं कि जब किसी कम्प्लेक्स पे वाइट लाइट पड़ती है तो एक तो ये है कि वो उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर ले तो वो हमें ब्लैक नज़र आएगा। अगर वो उस वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है तो फिर हमें, यानी वो ट्रांसमिट कर देता है, वो हमें वाइट नज़र आएगा। अब कलर बेसिकली में नज़र आता है जो विजिबल लाइट है,
जो वाइट लाइट हम उस पर फेंक रहे हैं, जो कि कंप्राइज करती है 7 डिफरेंट कलर्स में, तो वो जब कम्प्लेक्स पे पड़ती है तो विजिबल स्पेक्ट्रम हमें मुख्तलिफ कलर देता है। लेकिन अगर वो हमें कलरलेस नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है इंफ्रारेड रीजन में या यूवी विजिबल रीजन में। लेकिन एक चीज़ जो बेसिकली हमने देखी है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें यूजुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें जब ट्रांजिशन मेटल विद सम पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल को कम्प्लेक्स किया जाता है तो वो बेसिकली जो उसके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं या डी ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन हैं वो जब स्प्लिट होती है, क्योंकि कम्प्लेक्सेशन में ज़ाहिर है कि आप लिगेंड ट्रांजिशन मेटल को जब सराउंड करते हैं तो वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब ट्रांजिशन मेटल को देते हैं तो ये डिपेंड करता है कि जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं क्या वो अलोंग दी एक्सिस हैं या बिटवीन दी एक्सिस हैं। तो वो ऑर्बिटल ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं जो उनके रास्ते में आते हैं जहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहे होते हैं। तो लिहाजा उसमें फिर स्प्लेशन जो स्प्लिटिंग होती है उन डी ऑर्बिटल्स की वो डिपेंड करती है कि वो किस जो बैडली कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। जब लिगेंड्स जो है जब सेंट्रल मेटल को अप्रोच करते हैं तो ज़ाहिर है मेटल के पास डी ऑर्बिटल हैं और उसकी 5 ओरिएंटेशंस हैं। सम ऑर्बिटल दे हैव ओरिएंटेशन राइट ऑन द एक्सिस, सम ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल दे हैव देयर ओरिएंटेशन इन बिटवीन दी ऑर्बिटल्स। तो लिहाजा वो थोड़े से अगर तो हमारे लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं और वो जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो लिहाजा ये बेसिकली स्प्लिटिंग जो काज होती है, काज ऑफ स्प्लिटिंग इज़ ड्यू टू द अप्रोचिंग ऑफ द ligand towards the central metal, and those orbital they are badly affected if they are present on the axis and the ligands they are also approaching through the axis, they will be badly affected, and this will cause the splitting of d orbitals into 2 sets. One is of higher energy and the other is of low energy. This also depends upon the geometry, this also depends upon the number of the ligands, this also depends upon the this depends upon the power of the ligand as well. Splitting is caused of d orbitals is caused due to approaching of ligands to the central metal atom. The splitting of d orbital is caused due to approaching of ligands to the central metal atom during complexation, means complex formation. तो ये बेसिकली काज करता है अब the orbitals lying in the path of approaching ligands are greatly affected. So वो orbital जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं और जो उनके रास्ते में पड़े हुए हैं, सपोज ऑन एक्सिस हैं, एक्सिस पे पड़े हुए हैं और अलॉन्ग एक्सिस ही लिगेंड्स आ रहे हैं, तो ये बेसिकली कंपैक्सेशन के दौरान जो है वो जो स्प्लिटिंग है वो ऑर्बिटल्स की हो सकती है और उसमें फिर जाहिर है कि जो डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बेसिकली होगी तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर ऑर्बिटल विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, वो लाइट लेके जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो वो ऑर्बिटल जो लो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में होते हैं, दे एब्जॉर्ब लाइट, दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड दे जंप टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल with the absorption of some wavelength of light, and when it comes back to the lower energy orbital, it reflects, it transmits some color of light which is visible. तो उसी को हम basically देखते हैं. So this was all about the color of the complexes, that how these are colored, what is the reason and what are the different basic concepts behind it. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.